I am used to writing. मुझे लिखने की आदत है. Present, past and future customs. अगर किसी जमीले में आदत पाई जाए तो ज़माने के मुताबिक यूज्ड टू के बाद वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ing का इजाफा करें. Subject plus is I am was were will be plus used to plus verb plus ing. जैसा कि मुझे लिखने की आदत है. I am used to writing. वो काम करने का आदी है. He is used to working. उन्हें बात करने की आदत थी. They were used to talking. हसन ताश खेलने का आदी नहीं था. Hassan was not used to playing cards. आपको टीवी देखने की आदत होगी. You will be used to watching TV. क्या इसे खाना बनाने की आदत है? Is she used to making food? इसे चलने की आदत नहीं होगी. He will not be used to walking. अगर किसी जमीले में आदत पर जाना या आदत हो जाना का जिक्र पाया जाए तो पुरकोट यूज्ड टू के बाद वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ing का इजाफा करें. Subject plus has, have, had, will have plus got used plus verb plus ing. आप गुड यूज्ड टू को मुख्तलिफ टेंसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्हें नफी या सवालिया फाल के मुताबिक बनाएं. मुझे तंबाकू नवशी करने की आदत पड़ गई है. I have got used to smoking. इसे जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी. He will get used to getting up early. इसे सच बोलने की आदत पड़ गई थी. He had got used to speaking truth. क्या इसे देर से सोने की आदत हो गई होगी? Will she have got used to sleeping late? Homework. Now do it. Subscribe, like and share please, thank you. It is all for you.